Good morning class, I am Tushar Gupta, your science educator, and today we are here to start our new chapter, that is chapter number 13 of class 8, and the chapter name is light. Let's see what are its learning objectives. Learning objectives are introduction to light, laws of reflection, kinds of reflection, color blindness, and the Braille system. So now let's start our chapter. Like light, like the water and air, is essential to sustain life of human beings, animals and plant. जैसे कि वाटर और एयर एसेंशियल है, वैसे ही लाइट भी मेरी एसेंशियल है ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स और प्लांट की सस्टेन होने के लिए लाइफ. Plants prepare their food in the presence of light. We cannot see things in total darkness. When we enter a dark room, nothing could be seen, but as soon as the electric bulb is on, things in the room become visible. प्लांट्स जो प्रिपेयर करते हैं अपने फूड, वो प्रेजेंस ऑफ लाइट में ही करते हैं और हम कुछ भी नहीं देख सकते टोटल डार्कनेस के अंदर. और जब भी हम डार्क रूम में आते हैं हम कुछ भी नहीं देख सकते, और जैसे ही इलेक्ट्रिक बल्ब जो ऑन होता है हम तुरंत ही सारी चीजें विजिबल हो जाती है हमारे लिए. Light is a form of energy, thus light helps us to seeing around us. So we can say that the light is a form of energy that can be detected with our eyes. तो लाइट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और हम कह सकते हैं कि लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हम अपनी आई से डिटेक्ट कर सकते हैं. We have learned in earlier classes that there are three types of media found in nature. We have transparent media, which allow light to pass through them easily and through which we can see clearly. हमने प्रीवियस क्लास में देखा है कि तीन टाइप्स ऑफ मीडिया होते थे. एक होता है मेरा ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिसके थ्रू लाइट इजीली पास हो सकती है और हम क्लियरली देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्लास, वाटर, एयर एटसेट्रा. उसके एग्जाम्पल है ग्लास, वाटर, एयर. मीडिया थ्रू विच लाइट कैन पास पार्शियली बट वी कैन नॉट सी थ्रू देम क्लियरली आर कॉल्ड द ट्रांसपेरेंट मीडिया. फॉर एग्जाम्पल ऑयल पेपर, बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास. जो मेरे ऐसी मीडिया जिसके थ्रू लाइट पास हो सकती है पार्शियली और हमें वो चीजें जो होती हैं क्लियरली नहीं दिखाई देती, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट. जैसे कि ऑयल पेपर, बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास. और सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एट ऑल आर कॉल्ड द ओपेक मीडिया. वुड, मेटल, ब्रिक वॉल आर सम ऑफ द एग्जाम्पल. और ऐसे सब्सटेंस जो अलाउड को बिल्कुल भी, लाइट को बिल्कुल अलाउ नहीं करते, उनको हम बोलते हैं ओपेक मीडिया, लाइक द वुड, मेटल. Now, look at the two pictures. In this picture shown aside, one picture has one shadow and other picture has two. What does it mean? We have learned in previous class that light travels in a straight line. In case we put an opaque object on the way of light, it leaves its shadow opposite to the direction source of the light. So basically, ये दो पिक्चर दे रखी हैं, इसमें एक तरफ ही लाइट, एक तरफ ही शैडो है, इसमें दोनों तरफ शैडो है. और हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि लाइट ट्रेवल्स करती है एक स्ट्रेट लाइन के अंडर. ओके, सो अगर हम ओपेक सब ऑब्जेक्ट जो है लाइट के वे में पास कर देंगे तो वो एक शैडो प्रोवाइड करेगी. What happens when light falls on a plane mirror? A mirror has a smooth polished surface. When a ray of light strikes the surface of a plane mirror, it gets reflected. After reflection from the surface of the mirror, the rays of light continue to travel parallel to each other. एक जो मिरर होता है वो एक स्मूथ पॉलिश सरफेस होता है. ओके, जब भी रेज ऑफ लाइट उस पर स्ट्राइक करेगी तो उसका मतलब होगा कि सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ओके, नाउ आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो होगा सरफेस ऑफ द मिरर, तो रेज ऑफ लाइट जो होती है कंटिन्यू करती हैं ट्रेवल पैरेलल टू ईच अदर. नाउ एक्टिविटी जोन. Take a torch, a mirror, a plain sheet of white paper. Hold the torch at an angle and switch it on in such that light falls on the mirror. Hold the paper in other hand in front of the mirror. Can you see a bright patch of light on the paper? Light from the torch falls on the mirror and is reflected back. When the reflected rays are stopped by the paper, they illuminate the paper and a bright patch of the light is seen. जो लाइट होती है मेरी टॉर्च से वो फॉल करेगी मिरर के ऊपर और वो वापस रिफ्लेक्ट बैक करेगी. ओके, और जैसे ही रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो पेपर से स्टॉप हो जाएंगी तो वो बेसिकली पेपर को इल्यूमिनेट करेंगी. ओके, और एक ब्राइट पैच लाइट का हम देख सकते हैं. नाउ चेंज द पोजीशन ऑफ द पेपर. कैन यू सी द ब्राइट पैच ऑफ लाइट इफ यू चेंज द पोजीशन ऑफ द पेपर? डू यू नो व्हाई? इफ द पोजीशन ऑफ पेपर इज चेंज, it will not be in the path of the reflected rays. When a ray of light falls on a mirror, it gets reflected along a definite path.
When an object is placed in front of a plane mirror, two shadows are formed. One when light from the source is blocked, and the second when the light reflected from the mirror is blocked. अब अगर हम पेपर को जो हटा दें वहां से, तो हमें वो ब्राइट पैच जो दिख रहा था पेपर पे वो नहीं दिखाई देगा. सो जैसे पोजीशन चेंज हुई, मेरा पाथ जो हो गया, जो रिफ्लेक्टेड रेज का पाथ था वो तो चेंज नहीं हो रहा है, तो वहां पे मेरे को कोई भी पैच नहीं दिखाई दे रहा है. इसलिए जब भी एक रे ऑफ लाइट होती है, फॉल करती है मिरर पे, वो एक डेफिनेट पाथ पे ही मेरी रिफ्लेक्ट होती है. और जब भी मेरा ऑब्जेक्ट प्लेस हो जाएगा फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, दो शैडोज मेरी फॉर्म होंगी. एक जो लाइट से आ रही है सोर्स से ब्लॉक्ड होने पे, और सेकंड जब मेरी लाइट रिफ्लेक्ट होती है मिरर से ब्लॉक. The phenomena due to which ray of light traveling from one optical medium to another bounces off from its surface with the change of angle is called reflection of light. और ऐसा फिनोमेना जिसमें कि एक रे ऑफ लाइट जो होती है, जो ट्रेवल कर रही है एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे पे, वो बाउंस ऑफ कर जाएगी अपने उस सरफेस से और एक चेंज ऑफ एंगल के साथ में, तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर्स अकॉर्डिंग टू द certain rules. These are called the laws of reflection. To understand the laws of reflection of light, let us familiarize ourselves with the terms related to the reflection of light. जो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है वो कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग होता है, तो जिसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए हमें कुछ टर्म्स होते हैं, उनसे पहले फैमिलाइज होना पड़ेगा. नाउ इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट व्हिच स्ट्राइक्स अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे एक ऐसी रे ऑफ लाइट होती है जो स्ट्राइक करती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर. ओके, तो उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट एट विच अ इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्शन सरफेस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इन द फिगर इज आई. जो पॉइंट, ऐसा पॉइंट जिस पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है रिफ्लेक्शन ऑफ द सरफेस पे, उसको मैं बोलता हूं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. वो यूजुअली आई से डोनेट होता है. रिफ्लेक्टेड रे, द इंसिडेंट रे विच रिफ्लेक्ट्स आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिंग रे. ऐसी बेसिकली इंसिडेंट रे जो रिफ्लेक्ट होगी स्ट्राइक करने के बाद सरफेस को, तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे. और आई ए रिप्रेजेंट्स करेगा रिफ्लेक्टेड रे. नॉर्मल, द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड द नॉर्मल. ऐसा परपेंडिकुलर जो ड्रॉ होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, तो उसको मैं बोलूंगा नॉर्मल. जैसे कि ये मेरा नॉर्मल है. ओके, ये मेरी इंसिडेंट रे है और ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे है. ये मिरर है, मिरर पे ये इंसिडेंट हुआ है, कोई भी स्ट्राइक हुई है लाइट, और ये रिफ्लेक्ट हुई है, और ये मेरा नॉर्मल हो गया. नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. द एंगल DIM इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई. बेसिकली इंसिडेंट रे, ये मेरी इंसिडेंट रे है और ये मेरी नॉर्मल रे है. तो अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है, ओके, एंगल बना है, उसको मैं बोलूंगा आई, इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस. और जो एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इट इज कॉल्ड बाय द आई, सॉरी R, एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द R. बेसिकली रिफ्लेक्टेड रे का एंगल वो होगा जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होगा. ओके, उसको हम बोलेंगे एंगल R. ओके, नाउ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, ओके, एंड द रिफ्लेक्टेड रे जो होगा, वो सभी का सभी मेरा एक ही प्लेन में लाई करेगा. ओके, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल आई इक्वल टू एंगल आर. एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है बेसिकली ये एंगल, ये जो एंगल है, ठीक है, एंगल आई, तो ये इक्वल होगा मेरा ये एंगल का, ये इक्वल होने चाहिए. तो ये मेरा सेकंड प्रॉपर्टी होती है या सेकंड लॉ होता है. नाउ द एक्टिविटी जोन, ड्रॉ अ लाइन mm on the sheet of white paper, mark the point O in the middle of mm. From a point O on it, draw the normal on.
Make an angle of 30 degree from ON. Put two pins P1 and P2 on OA as far as possible. Place a plane mirror strip vertically on MM. Look P3 and P4 so that the P3, P4 and the image of P1 and P2 lies on the same straight line. Remove the pins, mark their position and draw the reflected ray. Measure the angle of reflection. Angle of reflection is equal to the angle of incidence. Repeat the experiment for I equal to 40 degree, 50 degree and 60 degree. Measure R in each case. Tabulate your observations. So we will find that angle I equal to R in each case. So यही है मेरा second law of reflection. Okay. Once you have drawn the incident ray and the normal of these, the plane of the paper in the above activity, the reflected ray lie in the same plane. This law firmly fixes the reflected ray. This confirms the first law of reflection. और ये मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा कि जो रिफ्लेक्टेड रे हुई वो भी मेरी लाई कर रही है सेम प्लेन के अंदर. तो जितनी भी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे हुआ वो सब मेरा सेम प्लेन में लाई करेगा. तो ये होगा मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. Now, how is an image formed in a plane mirror? A plane mirror has a smooth reflective surface. The surface of the glass is made of the reflective by applying a silver coating at the back of the glass. When light rays from an object falls on the surface of a plane mirror, they get reflected back. These reflected rays meet at a point when an extended backwards. The image is formed at this point. As the image is not formed by the actual rays of light, it cannot be captured on a screen. Such an image is known as virtual image. बेसिकली जो प्लेन मिरर होता है उसकी एक स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है. ओके. और जो सरफेस ऑफ द ग्लास होती है वो कैसे अप्लाई होती है? एक सिल्वर कोटिंग से अप्लाई होती है बैक ऑफ द ग्लास पे. और जब भी रेज या लाइट रे मेरी एक ऑब्जेक्ट की फॉल करती है सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर पे, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. और ये जो रिफ्लेक्टेड रे जो होती है मीट करती है एक पॉइंट पे. जब भी वो एक्सटेंड करेंगे बैकवर्ड तब वो मीट करेंगी. ओके. सो जो इमेज फॉर्म हो रही है वो मेरी वर्चुअल इमेज हो रही है. एक्चुअल रेज ऑफ लाइट से इमेज नहीं फॉर्म हो रही है, वर्चुअली हो रही है. सो इसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज. द इमेज विच कैन बी फॉर्म ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज. और ऐसी इमेज जो एक स्क्रीन पे फॉर्म हो जाए उसको हम बोलते हैं रियल इमेज. एज यू सी द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द मिरर, लाइट रेज ट्रेवल्स अलोंग योर लाइन ऑफ साइट. जैसे कि हम देखते हैं कि जो इमेज होती है ऑब्जेक्ट की मिरर में, जो लाइट ट्रेवल करती है वो लाइन ऑफ साइट में करती है. To verify that the reflected ray travel back in a straight line. To see the image of an object, you must see the object along a line because even light that is reflected travels in a straight line. When you bend the straw, the reflected ray which are traveling in a straight line gets blocked and hence you cannot see the object. अगर मेरे को इस कैंडल को देखना है और उसकी इमेज देखनी है मिरर में, तो अगर सीधे मैं इस स्ट्रॉ को सीधे रखा हुआ है तो मेरे को दिखेगा. बट अगर जैसे मैंने बेंड कर दिया स्ट्रॉ को वो मेरे को रे नहीं दिखेगी. तो हैंसफोर्थ ये हमें इलस्ट्रेट करता है कि वो स्ट्रेट लाइन में लाइट चलती है. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज इन अ प्लेन मिरर. The image is not formed by the actual rays of light, that is why it cannot be captured on the screen. Such an image is known as a virtual image. जो इमेज फॉर्म हो रही है वो एक्चुअल रेज ऑफ लाइट से नहीं हो रही, इसलिए इसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं क्योंकि ये स्क्रीन पे कैप्चर नहीं करी जा सकती. द इमेज इज अपराइट. जो इसकी इमेज होती है वो अपराइट पोजिशन में होती है. द इमेज इज फॉर्म एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट. और जो इमेज होती है वो उतनी ही फार होती है जितना मेरा ऑब्जेक्ट फ्रंट में होता है. तो उनका डिस्टेंस जो होता है सेम होता है. द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. और जो इमेज होती है वो सेम साइज की भी होती है ऑब्जेक्ट की. द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड. और इमेज जो होगी वो मेरी लेटरली इन्वर्टेड होगी. नाउ व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन? द वर्चुअल इमेज looks almost similar but it is not the exact replica of the object. जो वर्चुअल इमेज होती है वो सिमिलर तो लुक करती है बट बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका नहीं होती वो. द ऑब्जेक्ट ऑन द राइट साइड अपीयर टू बी ऑन द लेफ्ट इन द इमेज. तो जो ऑब्जेक्ट होता है राइट में वो लेफ्ट में दिखता है मिरर इमेज में, या फिर जो लेफ्ट में होता है वो राइट में दिखता है. द इमेज that is facing the mirror and not what the observer sees. बेसिकली जो ऑब्जर्वर सी कर रहा है वो रियल इमेज नहीं है.
The objects which are closer to the observer are the furthest in the image. This is the lateral inversion. तो basically जितना ऑब्जेक्ट मेरा दूर है उतना ही दिखेगा और उसकी पोजीशन लेटरली इन्वर्टेड होती है, यानी कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट. काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन. Reflection of light is of two types, two kinds depending on the nature of the reflecting surface. और मेरी two kinds होती है, like regular reflection और एक होती है irregular और diffuse reflection. When the reflecting surface is very polished and smooth, the light falling on it is a regular reflected. This phenomena is known as the regular reflection. Image formed by in this type of reflection. ऐसी अगर सरफेस हो जो वेल पॉलिश और स्मूथ हो, अगर उस पर लाइट मेरी फॉल करेगी तो उसको हम बोलते हैं रेगुलरली रिफ्लेक्टेड. ओके, और इस फिनोमेना को बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन. ओके, इमेज मेरी इसी में ही फॉर्म हो गई. और इफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इरेगुलर एंड नॉट पॉलिश, द रेज ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन इट आर स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन. दिस इज द इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. इमेज इज नॉट फॉर्म्ड इन दिस. अगर मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इरेगुलर है या पॉलिश नहीं है तो रेज ऑफ लाइट जो भी फॉल होगी वो स्कैटर्ड हो जाएगी सब डायरेक्शन में, सो मेरी इमेज फॉर्म आउट नहीं होगी और इसको हम बोलेंगे इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. Mirrors and polished metal surface shine because they reflect regularly nearly all the light which falls on them. Sometimes motorists are dazzled by the glare due to sunlight reflected by the wet or smooth surface of a road. Moonlight and sunlight are reflected by the surface of the sea. The waves behave as moving mirrors and the light is scattered in all directions. तो बेसिकली जो मिरर्स और पॉलिश मेटल सरफेसेस होते हैं वो शाइन करते हैं बिकॉज वो रिफ्लेक्ट करते रहते हैं रेगुलरली सभी जब भी लाइट उन पे फॉल करती है. और मोटरिस्ट भी डेजल हो जाते हैं ग्लेयर से क्योंकि सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है बाय द वेट और स्मूथ सरफेस ऑफ अ रोड. और मूनलाइट और सनलाइट भी रिफ्लेक्टेड होती है सरफेस ऑफ द सी से. Even the black color and unpolished reflect some light. Objects can be seen because their surface is reflected due to which the eye is sensitive. तो ऑब्जेक्ट्स सीन इसीलिए करे जा सकते हैं क्योंकि उनकी सरफेसेस जो होती है रिफ्लेक्टेड की वो मेरी आई के सेंसिटिव होती हैं. White surface reflect more light than dark surface. Thus, a room decorated with white glazed paper is brighter than a room decorated with dark unglazed paper. इसलिए जो white surface होता है वो रिफ्लेक्ट करता है ज्यादा लाइट rather than compared to the dark surface. इसलिए जो एक रूम डेकोरेट कर देंगे हम white glazed paper से वो ज्यादा brighter feel होगा rather than a dark unglazed paper. Now activity zone. Take two rectangular pieces of plain mirror and an object and adhesive tape. Place the two mirrors face to face and join them with the strips of adhesive tape fixed on the edges of the mirror. If you stand the mirrors on a table, the tape portion will act as a hinge allowing the mirrors to be moved slightly as required. Rays of light which are parallel get diffused upon the reflection from a rough surface. Adjust the mirror to form a 90-degree angle between them. Place an object between the mirror. Observe the images. Why do you see the three images? Images 1 and 2 of the object are formed upon the reflection from the mirrors M1 and M2 respectively. How is the third image formed? Since the two mirrors are held at an angle, mirror M1 becomes the object in mirror M2 and its image is formed in the M2. In the same way, the image of M2 is formed in M1. The third image is formed upon reflection from the two image mirror. Since the image in both these image mirrors are formed at the same spot, they appear as a single image. Now change the angle between the mirror to 60 degree. How many images are formed? When the angle is decreased, the image in the image mirror separate and more images of the object can be observed. Thus, multiple images in the plane mirror at an angle are formed due to multiple reflections. There is a definite relation of the angles between the hinge mirror and the images formed. It is follows. Number of images is equal to 360 divided by the degree of angle between the mirrors. अगर हमें नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड आउट करना है तो 360 को हम डिवाइड कर देंगे डिग्री ऑफ एंगल कितना है मिरर्स के बीच में. How many images will be formed if the angle between the hinge plane mirror is 45 degree? The picture show image formed by placing a book between two plane mirrors at an angle. Calculate the angle between the two mirrors. Now, what is refraction? When light rays travel from one optical medium to another, they appear to bend at the surface of separation of two media. This bending of light rays on the changing
of direction of light rays is called the refraction of light. बेसिकली जब भी लाइट रे ट्रेवल करती है एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में, तो वो अपीयर कर जाती है जब बैंड एट द जब भी सरफेस ऑफ सेपरेशन होता है उनका मीडिया टू मीडिया का, तो वो हल्की सी बैंड अपीयर करती है। यही बैंडिंग ऑफ लाइट रेज होती है जो चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द लाइट रेज से हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। नाउ एक्टिविटी जोन, make a point source of light by covering the face of a torch with a cardboard having a small hole in the middle. In a dark room, light the torch and direct the light rays on the surface of water kept in glass container as shown in the figure. In order to see the path of the light rays clearly, add a few drops of milk to make the water milky. You will notice that as the light ray enters the water, it bends at the surface. This bending of light as it passes from one medium to another is called the refraction. In this case, light enters from the air to water and bends towards the normal. Now keep a mirror at the bottom of the glass container and observe the path of the light as it emerges from water to air. You will notice that as light comes from water to air, it bends away from the normal. Now, the dispersion of the white light. Sunlight is a mixture of several colors. It is known as the white light. When white light or a beam of sunlight passes through a prism, it is spread out into various constituent colors. The splitting of light into its constituent color is called the dispersion of light. जो सनलाइट होती है वो मिक्सचर होती है बहुत सारे कलर्स का, तो वो हमारी होती है व्हाइट लाइट। और जैसे व्हाइट लाइट को या फिर एक बीम ऑफ सनलाइट को हम एक प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं, तो वो स्प्रेड आउट हो जाती है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, और इसी स्प्लिटिंग अप को बोलते हैं हम डिस्पर्जन ऑफ द लाइट। द रीजन ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज दैट द डिफरेंट कलर्स आर डिवाइडेड बाय द different amount due to difference in their respective refractive indexes. It was Newton who first found out the dispersion of the light through a prism. जो रीजन है डिस्पर्जन ऑफ लाइट का वो ये है कि अलग अलग कलर जो होते हैं वो डेविएट कर जाते हैं डिफरेंट अमाउंट से। क्यों? क्योंकि उनके डिफरेंसेस है उनके बीच में, जो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है उनका डिफरेंसेस है, और ये न्यूटन ही थे जिन्होंने फर्स्ट फाउंड आउट किया डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू एक प्रिज्म से। द Rainbow is a spectacular example of the dispersion of white light. In air, light rays of different colors travel at the same speed. In the sky, after rain, each suspended drop of water acts like a prism, and when the white light of the sun falls on these drops, it splits into its constituent color, that is the Vibgor. This is because they bend at different angles. The red light bends the least, the violet bends the most. It is the band of distinct color that we see as a beautiful rainbow. बेसिकली रेनबो भी एक स्पेक्टर का एग्जाम्पल है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट का। जब भी एयर में लाइट रे डिफरेंट कलर्स की ट्रेवल करती हैं सेम स्पीड से, तो स्काई में अगर रेन के बाद में कुछ सस्पेंडेड ड्रॉप्स ऑफ वाटर होंगी तो वो एक्ट करेंगी जैसे प्रिज्म है। ओके, जैसे व्हाइट लाइट सन की फॉल करेगी उन ड्रॉप्स पे तो वो स्प्लिट कर जाएंगी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, दैट इज विबगर। ओके, दिस इज बिकॉज वो डिफरेंट एंगल्स पे बैंड हो जाएगी। तो जो मेरा रेड कलर है वो सबसे कम बैंड होगा और जो वायलेट कलर है वो सबसे ज्यादा बैंड होगा, इसीलिए मेरा एक डिस्टिंक्ट कलर का एक ब्यूटीफुल रेनबो बन जाएगा। Now, how do we see? Light rays enter the eyes and are bent as they pass through the cornea and the humors. The ciliary muscles change the shape of the lens to focus an inverted image onto the retina. The sharpest image is formed at the fovea. The light sensitive rod and cone cells are densely packed in this part of the retina. बेसिकली जो लाइट रे एंटर कर रही है मेरे आइज को वो बेंड हो जाती है जैसे में पास करते हैं कॉर्नर से और ह्यूमर से। जो सिलेरी मसल्स होती है वो चेंज कर देगी शेप ऑफ द लेंस कि वो फोकस कर पाए एक इन्वर्टेड इमेज को रेटिना के ऊपर, और जो शार्पेस्ट इमेज फॉर्म होगी वो मेरी फोविया पे होगी। जो लाइट सेंसिटिव रॉड होती है, कोन सेल्स होते हैं, वो डेंसली पैक्ड होते हैं इन द पार्ट ऑफ द रेटिना। रॉड्स विल रेगुलेट द विजन इन द डिम लाइट एंड कोन्स रेगुलेट द कलर विजन एंड डिटेल। जो रॉड्स होंगे वो रेगुलेट करेंगे विजन को डिम लाइट में, और जो कोन्स होंगे वो रेगुलेट करेंगे कलर विजन एंड डिटेल। These cell contains the colored pigment that observe the color of the light। और जो सेल्स होते हैं वो कंटेन करेंगे कलर्ड पिगमेंट, ओके, जो एब्जॉर्ब करेगा कलर ऑफ द लाइट। They absorb the light causing chemical changes in the pigment and some energy is released।
और वो एब्जॉर्ब कर लेंगे लाइट को, जिससे कि केमिकल चेंज होगा पिगमेंट के अंदर और कुछ एनर्जी रिलीज होगी. दिस एनर्जी रिलीज इनटू एन इलेक्ट्रिक इंपल्स एंड इज कैरिड बाय द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन. और ये एनर्जी जो होती है वो टर्न हो जाएगी एक इलेक्ट्रिक इंपल्स के अंदर और वो कैरिड हो जाएगी ऑप्टिक नर्व जो ब्रेन पे जाके कैरी होगी. द ब्रेन एनालाइज द इमेज एंड दिस इज हाउ वी सी. और उसके बाद में ब्रेन एनालाइज करेगा उस इमेज को, सो हम देख पाएंगे. Color blindness. People with color blindness are not blind. Color blind people have abnormal color vision. They are unable to distinguish between the certain colors. It is an inherited defect. Look at the color circle. Can you see what is written in it? If yes, you are not color blind. Basically, जो people color blindness से people को जो color blindness होता है तो वो basically वो blind नहीं है, just उनको एक एबनॉर्मल कलर विजन है, वो कुछ डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कुछ कलर्स के बीच में. सो ये एक इनहेरिट डिफेक्ट है. नाउ डिफेक्ट्स ऑफ द विजन. सर्टेन पीपल हैव डिफिकल्टी इन सीइंग थिंग्स, thus have the abnormality in the normal vision of the eye called the defects of vision or defects of eye. कुछ पीपल होते हैं उनको डिफिकल्टी होती है देखने में कुछ चीजें. ओके, सो इस चीज को ही जो एबनॉर्मेलिटी है उसी को हम बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ द विजन और डिफेक्ट ऑफ आई. कॉमन डिफेक्ट्स जो होते हैं वो मेरे दो टाइप के होते हैं, मायोपिया शॉर्ट साइटनेस और हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस. मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस. अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द मायोपिया और short sightedness can see the nearby object clearly but cannot see the far off objects clearly. Thus short sightedness or myopia is the defect due to which a person is not able to see the distant object clearly though can see the nearby objects clearly. Myopia एक ऐसी बीमारी है जिसमें दूर का कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको नहीं दिखाई देगा बट वो पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है. दूर के ऑब्जेक्ट देखने में उसको प्रॉब्लम होती है. Causes of the myopia. Myopia is caused by following reason: decrease of the focal length of the eye lens, elongation of the eyeball, that is increase in the length of the eyeball. ये दो कारण से होती है. अगर मेरा फोकल लेंथ आई लेंस का डिक्रीज हो जाए या फिर जो आई बॉल जो है वो इलोंग हो जाए, यानी कि लेंथ जो है आई बॉल की वो इंक्रीज हो जाए. करेक्शन ऑफ द मायोपिया. The myopia can be corrected by making the eye lens less convergent. जो मायोपिया होती है वो करेक्ट हो सकती है आई लेंस को लेस कन्वर्जेंट बना के. ओके, दिस इज डन बाय प्लेसिंग अ कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ बिफोर द आई लेंस. और ये कैसे हो सकता है? एक कॉनकेव लेंस को प्लेस कर दिया जाए सुटेबल फोकल लेंथ का आई लेंस से पहले. नाउ द हाइपरमेट्रोपिया और फारसाइटेडनेस. A person suffering from the hypermetropia can see the distant object clearly but cannot see the nearby objects clearly. The long-sighted person has a difficulty in reading. The hypermetropia, long farsightedness, is the defect due to which a person is not able to see the nearby objects clearly, though can see the distant object clearly. अगर कोई भी पर्सन दूर का उससे सब कुछ सही दिखाई दे रहा है बट उसको पास का सही नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको वो सफर कर रहा है हाइपरमेट्रोपिया से. What are the causes? Increase of the focal length of the eye lens and shortening of the eyeball, that is decrease in the length of the eyeball. अगर मेरी फोकल लेंथ आई लेंस की इंक्रीज हो जाए या फिर आई बॉल जो है वो शॉर्टन हो जाए यानी कि डिक्रीज हो जाए लेंथ आई बॉल की. Correction of the hypermetropia. Hypermetropia can be corrected by making the eye lens more divergent. This is done by placing a convex lens of suitable focal length before the eye lens. Hypermetropia किससे दूर हो सकता है? एक convex lens को place करके एक suitable focal length से. Other causes: blindness can also be caused due to certain disease. Trachoma, a viral infection, smallpox, and certain sexually transmitted disease can cause the blindness. Injuries to eyes due to accident and burns are another cause of blindness. Now the activity zone. Hold a book in front of you, look at the words. Move the book close to your eyes, keeping your eyes fixed on the words. You will find that the words look blurred. Now gradually take the book away from your eyes and stop when you see the words clearly again. This is the approximate near point distance of your eye. Measure this distance and compare it with your brother and father.
Take care of your eyes. Eat food rich in vitamin A. Vitamin A deficiency causes the cataract and light blindness. बेसिकली हमें विटामिन ए जिसमें होते हैं ऐसे फूड्स को खाना चाहिए, क्योंकि अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो वो कैटरेक्ट और नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करती है. Always wash your hands before touching your eyes. When wiping a tear or removing a dust particle from your eye, use a clean piece of cloth. Do not rub your eyes with your fingers. Keep away from flying toys or objects with sharp edges. Never point flying toys at another person. Chemicals can damage your eyes. If a chemical enters your eye, follow the instructions given on the product on how to clean the eye. Stay away from the firecrackers and explosives. Now the Braille system. Louis Braille was born on the January 4, 1809 in a small village near the Paris. His father, a leather worker, often used sharp tools in his work. While playing in his father's shop when he was 3, Louis injured his eye. In spite of good care, infection set in and soon left him completely blind. लुइस ब्रेल जो थे वो बॉर्न हुए थे 4 जनवरी 1809 में, और वो एक स्मॉल विलेज में थे नियर पेरिस, और उनके फादर जो थे एक लेदर वर्कर थे. वो ऑफन यूज करते थे शार्प टूल्स अपने वर्क के लिए. तो अपने प्लेइंग करते टाइम पे वो अपनी इंजर्ड हो जाती है उनकी आई, और केयर के बाद भी इन्फेक्शन सेट हो जाता है और वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाते हैं. While a student, he began to use his creativity to invent an easy and quick way for the blind people to read and write. स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट थे, तो उन्होंने बिगिन किया कि एक अपनी क्रिएटिविटी से कुछ इन्वेंट किया जाए, एक इजी और क्विक मेथड ब्लाइंड पीपल को रीड करने के लिए. Louis heard of a system of raised dots developed by a French army captain Charles Barbier. Barbier originally created a code of raised dots and dashes as a way to allow the soldiers to write and read message at night without using a light that might give away their positions. Basically, एक फ्रेंच आर्मी कैप्टन थे चार्ल्स बार्बियर, उन्होंने एक मेथड क्रिएट किया था, एक कोड, जिससे कि कोड कैसे बनाया था, डॉट्स और डैशेस से, जो अलाउ करता था सोल्जर्स को राइट और रीड करने के लिए मैसेज नाइट में बिना किसी लाइट जलाए, क्योंकि अगर लाइट जला देंगे तो उनकी पोजीशंस पता चल जाएगी. He later adapted the system and presented it to the Institution for Blind Youth, hoping that it would be officially adopted there. So, उन्होंने प्रेजेंट किया इस सिस्टम को ब्लाइंड इंस्टीट्यूशन फॉर ब्लाइंड एंड यूथ में, जिससे कि वो ऑफिशियली अडॉप्ट हो जाए. इट वॉज बेस्ड ऑन द फिनोटिक्स एंड कंसिस्टेड ऑफ ग्रुप्स ऑफ 12 डॉट्स अरेंज इन अ 2 कॉलम ऑफ 6 डॉट्स ईच. और वो बेस्ड था फिनोटिक्स पे और कंसिस्टेड करता था ग्रुप्स ऑफ 12 डॉट्स और अरेंज होता था 2 कॉलम्स ऑफ 6 डॉट each. Louis Braille published the first Braille book in 1829. In 1837, he added symbols for the math and music. उन्होंने पहली बुक अपनी पब्लिश करी ब्रेल बुक 1829 में, और 1837 में उन्होंने सिंबल्स ऐड करे मैथ और म्यूजिक के लिए. Louis Braille went on to become a beloved and respected teacher, was encouraged in his research and continued to believe in the value of his work. और वो काफी ज्यादा बिलव्ड और रेस्पेक्टेड टीचर हो गए, और इंकरेज उनको किया गया रिसर्च और कंटिन्यू टू बिलीव इन द वैल्यू ऑफ हिज वर्क. His system of reading and writing with the raised dots was very widely accepted his own time. Louis Braille died of tuberculosis on January 6, 1852. Today, virtually in every language around the world, the code named after the Louis Braille is the standard form of writing and reading used by the blind people. The system of letters, numbers, and the punctuation mark consists of 6 raised points or dots used in the 63 possible combination. तो सिस्टम जो होता है वो कंसिस्ट करता है लेटर्स, नंबर और पंक्चुएशन मार्क, जो कंसिस्ट करते हैं 6 रेज पॉइंट्स का या डॉट्स का, जो 63 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना सकता है. Now let's recall. Light is reflected from all the surface. Regular reflection takes place when light is incident on a smooth, polished and regular surface. Generally, when light passes from one medium to another, it bends at the surface. Light travels in a straight line. This property is called rectilinear propagation of light. The blue color of sky, orange and red color sunset and sunrise respectively due to the dispersion of light. Light has 7 colors named the violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. This is Vibgvar. Braille is the system of series of raised dots that blind people can read with his fingertips. Glossary. Cornea, the front portion of the eye made up of a transparent material.
Refraction, the phenomenon of change in the direction of travel of light into two different medium. Retina, the light sensitive region of the eye. Reflection, the returning of a ray of light when it strikes a polished surface in accordance with the definite laws. So now student, it's the time for the practice. A ray of light which strikes a reflecting surface is called the incident ray, normal, reflected ray, none. It is a incident ray. The angle of reflection is the angle between normal incident ray, normal reflected ray, reflected and the incident ray, all. Normal and the reflected ray. When light strikes a cotton cloth, the individual rays reflected remains as concentrated bundles or rays scatter in the different direction, form an image none. Scatter in different directions. Now, the angle between the two faces of a prism is called the refracting angle. Okay. Now, the lens is colorless and the transparent. The image of the object always formed at the retina. Dash is the light sensitive region of the eye, retina. Okay. So now take the correct. Light can travel through various medium. Yes. Correct the light sensitive region. No. To correct myopia, we use the concave. Yes. In hypermetropia, the objects kept at a distance cannot be seen. No. Now, basically, what is light? So basically light is a form of energy, okay, and through this form of energy we can see, or we basically other things are visible. Okay, what is the arrangement of colors in the spectrum? Basically arrangement in this form: whip curve, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Okay, now what is eye? एक organ है. Okay, basically is an organ of a human body through which we can see, or visibility occurs through this eye only. Now what is hypermetropia? Hypermetropia is a disease. Okay, it is a disease through which nearby objects, okay, they are not clearly visible, but far away objects are clearly visible. Okay, now what do you understand by the refraction? Explain with the help of example. Basically, the short answer and long answer type question all are described in the class. Okay, so I'm just giving you the reference from where you can find the answer. For the understand by the refraction. For refraction, you can take this reference, and for the activity, you can take this activity. Okay. Give a common phenomenon related to the refraction. It is a rainbow. Okay. Write down about the external structure of an eye. For the external structure, you can take a reference from this paragraph. Okay. What is myopia and give its reason correction of this problem? Basically, myopia, here we have described what is myopia, and for the correction and for the cause of myopia also given in this paragraph only. Draw a ray diagram to illustrate the refraction of light by a parallel phase glass slab. This is the laws of reflection. So this activity already described in the class. For the laws of reflection, you can see these are the laws of reflection. Okay. Describe brief out the internal structure of the human eye. Same of the human eye as described in the previous question. At external structure, same is of the internal structure. What is braille? How do visually challenged make the eye make the use of braille for reading? Basically,
ब्रेल सिस्टम में ही इसका पूरा आंसर दिया गया है कि ब्रेल सिस्टम क्या था और कैसे उसमें लोग यूज करते हैं ब्रेल को पढ़ने के लिए। सो थैंक यू क्लास।